ये देखिए, ये पार्ट है, ये चीज़ ऊपर आएंगी ना, यू आर शेयरिंग स्क्रीन। हाँ जी, यहाँ पे लिखा है ठीक है। ये 128 128 है। तो कितने नॉर्मली होते हैं? जी। कितने नॉर्मली है? इनकी क्लास कितने की है? इनकी जो क्लास हो गया है 160, हाँ जी, 160, 150, 160, 50, नहीं नहीं 60। 160। जी मैम। तो ये बाकी अटेंड नहीं कर रही हैं क्या है? मैम बाकी ना कुछ तो अटेंड नहीं कर रहे, कुछ ना लीक हो जाते हैं, कुछ कनेक्शन प्रॉब्लम की वजह से ना वो निकल जाते हैं, उसके बाद फिर आ जाते हैं, तो कुछ वैसे नहीं आते, एबसेंट होते हैं। अच्छा, इनको जाना है वैसे। हेलो, आवाज़ आ रही? अच्छा जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर नुसरत, आपसे आज बात कर रही हैं। अच्छा, आज हम करेंगे integration of renal mechanism for control of extracellular fluid. The extracellular fluid is largely comprised of sodium chloride and water. लार्ज टेस्ट में ज़्यादातर जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में सोडियम क्लोराइड और पानी वाटर होता है, लेकिन इसमें ऑल्सो इट हैज़ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ bicarbonate, potassium, calcium, magnesium, and phosphate. All these components should be maintained within normal range throughout the life for normal working of the body. We lose sodium chloride हम सोडियम क्लोराइड वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स कॉन्टिन्यूसली लूज कर रहे होते हैं evaporation से excretion in the urine and secretion. So जो जितना हम लूज कर रहे हैं इट शुड बी रिप्लेस्ड बाय फ्लूइड फूड इनटेक एंड दैट फूड जो हम लेते हैं वो जीआईटी से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट से एब्जॉर्ब होनी चाहिए है। अब सोडियम और वाटर जो है मेनली डोमिनेट, जैसे मैंने बताया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में डोमिनेट करते हैं और इनकी वजह से एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड की होम्योस्टेसिस होती है। अदर जो बाकी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, बट सोडियम और वाटर जो है वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नाउ विच इन टर्न डिटर्मिन्स प्लाज्मा वॉल्यूम, कितना सोडियम वॉल्यूम एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है उससे हमको पता चलता है प्लाज्मा वॉल्यूम कितना है, कार्डियक आउटपुट कितना है। CO स्टैंड्स फॉर कार्डियक आउटपुट और मीन आर्टीरियल प्रेशर, MAP स्टैंड्स फॉर मीन आर्टीरियल प्रेशर, वो कितना है। ये सब हमको एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के कंटेंट से कितना वो है उसमें वॉल्यूम से पता चलेगा। अब if kidney is not kidney disturbance is not severe, तो सोडियम बैलेंस जो है मे बी अचीव्ड, नॉर्मल किडनी में तो अचीव होती है, उसमें तो हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन अगर किडनी डिस्टर्बेंस है और किडनी डिस्टर्बेंस ज़्यादा नहीं है तो सोडियम बैलेंस जो है वो किडनी के अंदर ही इंट्रा रीनल एडजस्टमेंट हो जाती है विद मिनिमल चेंजेस इन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और अदर सिस्टेमिक एडजस्टमेंट्स, जैसे कि हमने बात की प्लाज्मा के कार्डियक आउटपुट और मीन आर्टीरियल प्रेशर के एडजस्टमेंट से। सो जो थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है किडनी में, तो वो तो किडनी के अंदर खुद ही एडजस्ट हो जाती है। किडनी अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है कि उसने कितना फ्लूइड रिटेन करना है, कितना रीएब्जॉर्ब होगा, वो करेगा, कितना एक्सक्रीट करेगा, और सोडियम क्लोराइड और वाटर, मेनली दीज आर द थिंग्स। लेकिन इफ द डिस्टर्बेंस इज severe,
then systemic adjustments come into play, for example, blood pressure, changes in circulating hormones, and alteration in sympathetic nervous system activity. अगर डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा स्फेयर है किडनीज की, किडनी के डैमेज या जो उसमें हो रहा है वो स्फेयर है, तो किडनी के अंदर जो रीएडजस्टमेंट है उससे ये काम नहीं चलता है, तब ये एडजस्टमेंट्स होती हैं ब्लड प्रेशर की रीएडजस्टमेंट के साथ, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स जो हैं उनके साथ, और ऑल्ट्रेशन इन सिंपैथेटिक नर्वस एक्टिविटी. These adjustments affect the whole body. ये जो जैसे कि हमने देखा है कि ये सब चीज़ें इन्वॉल्व हैं, ब्लड प्रेशर, सर्कुलेटिंग हार्मोन्स और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, तो डेफिनेटली ये सारी बॉडी को इन्वॉल्व करेंगे. फॉर एग्जांपल, इम्पेयर्ड रीनल फंक्शन जो है, इट इज़ गोइंग टू लीड टू इंक्रीज्ड blood pressure, which in turn is going to help to maintain sodium excretion. In long term, this disturbance, blood pressure increases and ज़्यादा हो जाता है blood pressure, और it injures the blood vessels, heart and other organs. Now, sodium excretion is controlled by altering the glomerular filtrate, tubular rate, sodium reabsorption rate. सोडियम एक्सक्रीशन जो कंट्रोल होती है किससे, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन से, कितनी हो रही है, कितना हमने अचीव करना है, उसके हिसाब से ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो है वो कम और ज़्यादा होगी. और इसी तरह से ट्यूबुलर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन रेट जो है, ज़्यादा रेट सोडियम में रीअब्सॉर्ब होना है, कम होना है, इट्स गोइंग टू बी अकॉर्डिंगली. अब एक्सक्रीशन का फॉर्मूला क्या है? एक्सक्रीशन जो हम यूरिन जो फ्लूइड हम एक्सक्रीट करते हैं अलॉन्ग विद इलेक्ट्रोलाइट्स इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन. जितने ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट है उसमें से हम माइनस कर देंगे ट्यूबुलर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन. उसमें से कितनी ट्यूबुलर सोडियम रीअब्सॉर्प्शन हो रही है, वॉट एवर इज लेफ्ट इज द एक्सक्रीशन, एक्सक्रीटिव प्रोडक्ट. नॉर्मली ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है वो इज़ 180 लीटर्स पर डे. एक दिन में 180 लीटर्स ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होती है, और नॉर्मल एक्सक्रीशन जो है दैट इज़ ओनली 1.5 लीटर्स. अब हमने देखा है कि देखते हैं कि ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट तो जो है वो 180 लीटर्स है, और एक्सक्रीट्स सिर्फ 1.5 लीटर्स हो रहा है पर डे. तो सो दैट इज़ नॉर्मल. So most of the water and electrolytes are preserved in the body. Seen that small changes in it is seen that small changes in glomerular filtrate or tubular reabsorption results in large changes in renal excretion. इसका एग्जाम्पल है कि अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में 5% इंक्रीज होता है तो वो 180 से 189 लीटर्स पर डे पे चली जाएगी. और सो 9 लीटर्स पर डे की जो इंक्रीज, क्योंकि हमने मेंटेन करना है 180 पे, सो 9 एक्स्ट्रा जो है 9 लीटर्स वो excrete हो जाएगा in renal excretion. Similarly, small changes in tubular reabsorption in the absence of compensatory adjustment, जब adjustment of glomerular filtration rate के adjustments नहीं होती, small changes in tubular reabsorption, that is going to result in dramatic changes in urine volume and sodium excretion. अब सपोजिंग ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में थोड़ी सी चेंज है, कम रीअब्जॉर्ब हो रहा है, तो रिजल्ट विल बी ड्रामेटिक change in urine volume and sodium excretion. With disturbance
जब JFR की डिस्टर्बेंस होगी या ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन की डिस्टर्बेंस होगी, तो changes in the urinary excretion, excuse me, is minimized by buffering systems. अब बॉडी में बफरिंग सिस्टम्स होते हैं जिसकी वजह से ये जो चेंजेस डिस्टर्बेंस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट में है, ट्यूबुलर एब्जॉर्प्शन में है, इनकी यूरिनरी एक्सक्रीशन की डिस्टर्बेंस जो है मिनिमाइज होगी, कम से कम होगी, क्योंकि बफरिंग सिस्टम जो कि बॉडी के अंदर हैं वो इसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे. For example, when kidney becomes greatly vasodilated and glomerular filtration rate increases. किडनी वेसोडाइलेट हो गई है, उसके जो ब्लड वेसल्स हैं वो डायलेट हो गए हैं और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट सो इज इंक्रीज्ड. This condition raises sodium chloride delivery to the tubules. अब जितना ज़्यादा वेज़ोडाइलेटेशन होगी, ये उतना और उतना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा, और जब जितना ज़्यादा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होगा तो उतना ज़्यादा सोडियम क्लोराइड जो है इज़ कमिंग इनटू द ट्यूब्यूल्स. देयर आर टू इंट्रारेनल कॉम्पेंसेशंस. इसको कॉम्पेंसेट करने के लिए दो इंट्रारेनल मैकेनिज्म्स हैं. नंबर वन इज इंक्रीज ट्यूबुलर reabsorption of much of the extra sodium chloride filtered, and this is called glomerulotubular balance. ये हम इसको ग्लोमेरुलोट्यूबुलर बहुत जो ट्यूबुलर रीअब्सॉर्प्शन है वो सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा करेगी जो कि फ़िल्टर हुआ है, और इसको हम ग्लोमेरुलोट्यूबुलर बैलेंस कहते हैं. सेकंड मैकेनिज्म इज मैक्यूला डेंसा जो होता है उसकी फीडबैक. In this case, in which there is increased sodium chloride delivery to the distal tubule, जो सोडियम क्लोराइड की डिलीवरी जो है डिस्टल ट्यूब्यूल को ज़्यादा होती है, ये कॉज करता है एफरेंट आर्टीरियल्स की कंस्ट्रिक्शन. जो एफरेंट आर्टीरियल्स किडनी को आ रहे हैं इन द ग्लोमेरुलस, वो उसकी कंस्ट्रिक्शन कॉज करेगा एंड रिटर्न द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट टूवर्ड्स नॉर्मल. जब उसकी कंस्ट्रिक्शन होगी तो फ्लूइड जो है वो पास इन नहीं हो रहा है, फिल्टर नहीं हो रहा, सो उसकी जो जो एक्सेसिव फ्लूइड पास ऑन हुआ था इट विल कम बैक टू नॉर्मल. एंड सेम हैपन्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स एंड लूप ऑफ हैंडे. जब इनमें ज़्यादा होगा तो इनकी रीअब्सॉर्प्शन ज़्यादा हो चुकी है. Neither of these two mechanisms are perfect to restore sodium chloride to normal. ये दोनों मैकेनिज्म जो हैं बिल्कुल परफेक्ट नहीं है कि इनके जो सोडियम क्लोराइड चेंजेस और वाटर चेंजेस आई हैं वो वापस जो बिल्कुल नॉर्मल लेवल्स पे चली जाए. सो इस केस में देयर आर अदर फीडबैक मैकेनिज्म्स जो अपना रोल प्ले करते हैं, लाइक ब्लड प्रेशर चेंजेस, चेंजेस इन अदर हार्मोन्स, और ये मिलके इंट्रारेनल मिलके प्लस ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है ब्लड प्रेशर चेंजेस और अदर हार्मोन चेंजेस, इट ब्रिंग्स सोडियम क्लोराइड टू नॉर्मल. हमारे पास और जो फैक्टर्स हैं वो है प्रेशर नेट्री यूरिसिस एंड प्रेशर डायूरिसिस. जो ब्लड प्रेशर चेंजेस के साथ सोडियम एक्सक्रीशन होती है इन यूरिन, और ब्लड प्रेशर के साथ ज़्यादा यूरिन आउटपुट होता है, वाटर एक्सक्रीशन होती है. ओके.
Now, pressure diuresis is effect of increased blood pressure to raise urinary volume excretion, or pressure natriuresis is rise in sodium excretion, जैसे कि मैंने बताया है, that occurs with increased blood pressure. That blood pressure increase करेगा तो it is going to result in increased excretion of sodium and water. सोडियम की को हम कहते हैं प्रेशर नेट्रिक्यूरिसिस और वाटर की को हम कहते हैं प्रेशर डाययूरिसिस. Here we have a graph. इसमें हमें क्रॉनिक एक्यूट एंड क्रॉनिक इफेक्ट ऑफ आर्टीरियल प्रेशर दिखाए हुए हैं. जब ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है एक्यूट स्टेज में और क्रॉनिक कंडीशंस में, तो इसका क्या इफेक्ट होता है. ये एज वी कैन सी here, this is the acute effect. It's a slow rise in the urinary excretion with increase in the rise of the blood pressure. Chronic में there is sudden rise and steep rise, हम इसको कहेंगे, and this is the steep rise in the of urinary excretion, sodium urinary excretion in case of uh, rising blood pressure in chronic case. Uh, Here we can see the effect of acute and chronic. जैसे मैं आपको बता रही थी, chronic increase in blood pressure with an acute rise in blood pressure of 30 to 50 millimeters of mercury. This causes only 2 to 3 fold increase in the urinary sodium output, and this is effect is independent. Acute rise है, acute की वो independent बाकी चीज़ों से है, it is going to uh, uh, cause 2 to 3 fold of increase in urinary sodium output only, and this is because of activity of sympathetic nervous system. This is dependent on should be activity of sympathetic nervous system, angiotensin 2, antidiuretic hormone, and aldosterone. In chronic cases where high blood pressure is going to suppress renin release from the kidneys, this is going to decrease angiotensin and aldosterone formation. Renin release जो है chronic high blood pressure में suppress करेगा renin release kidneys में से, जो कि इन टर्न डिक्रीज करेगा angiotensin 2 और aldosterone formation. These two are going to inhibit renal tubular absorption of sodium, so increased sodium and water retention होगा. ये inhibits renal excretion and sodium absorption is there is increased sodium and water retention in the body. Now, in case of going on to pressure natriuresis and pressure diuresis, these are two main components of renal body fluid feedback for regulating body fluid volume and arterial pressure. Now, during changes in sodium and fluid intake, जब fluid sodium और fluid intake की changes होती हैं, this feedback mechanism helps to maintain fluid balance, to minimize changes in blood volume, extracellular fluid volume, and arterial pressure as follows. Number one, कैसे ये करेंगे? Number one is an increase in fluid intake, assuming that sodium accompanies that fluid intake. Fluid
इनटेक हम ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन उसमें सोडियम जो है हमको पता होना चाहिए कि उसमें सोडियम इंक्लूडेड है, and we take this fluid intake above the level of normal level of urine output, and this causes टेम्परेरी, जब हम ज़्यादा फ्लूइड ले रहे हैं तो यूरिनरी आउटपुट के जो हो रहा है ऑलरेडी उसके अमाउंट से उसके लेवल से ज़्यादा कर रहे हैं, तो वो फ्लूइड जो है इट इज़ गोइंग टू एक्यूमुलेट इन द बॉडी. Number two is, as long as fluid intake exceeds urinary output, fluid accumulates in the blood and interstitial spaces. जब तक फ्लूइड इनटेक जो है वो यूरिन आउटपुट से ज़्यादा है, ये एक्यूमुलेट करेगा ब्लड में और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में, causing parallel increase in blood volume. जब ये एक्यूमुलेट हो रहा है ब्लड में, नेचुरली ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है. As will be discussed later, the actual increase in these variables are usually small. Actually increase जो है इन variables में कम होती है. In these variables are usually small. ठीक है? Because of the effectiveness of this feedback mechanism. जो feedback mechanism हमने बताया, जो कि था हमारा renal body fluid feedback mechanism. So इस feedback mechanism से these changes are not dramatic. They are just small because ये adjust करता रहता है. Number three, an increase in blood volume raises mean circulatory filling pressure. Blood volume ज़्यादा होगा, mean circulatory जो filling pressure है वो ज़्यादा हो जाएगा. That in turn increases in the main circulatory and जो mean circulatory filling pressure है, it rises pressure gradient for venous return. प्रेशर ग्रेडियंट रेज होगा, सर्कुलेटिंग फिलिंग ज़्यादा है, venous रिटर्न जो प्रेशर ग्रेडियंट कम है, सो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, और सो इट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन it helping in venous return. अब क्या होता है, इंक्रीज इन प्रेशर ग्रेडियंट फॉर venous returns elevates cardiac output. सो हमने देखा कि मेन सर्कुलेटरी फिलिंग प्रेशर ज़्यादा हुआ है, उसकी वजह से वीनस रिटर्न ज़्यादा हो गया है. जब वीनस रिटर्न ज़्यादा होगा, नेचुरली दिस वीनस रिटर्न जो है it is going to that much of blood, more blood is going to heart, and so cardiac output is also going to elevate. An increased cardiac output raises arterial pressure. ज़्यादा कार्डियक आउटपुट होगा तो ज़्यादा आर्टीरियल प्रेशर होगा, क्योंकि ज़्यादा ब्लड इज गोइंग टू द systemic circulation and increasing the pressure there. An increased arterial pressure increases urine of a normal pressure of urine output by way of pressure diuresis. जब arterial pressure ज़्यादा होगा, it's going to move more sodium and water to the kidneys, and so more sodium and water, sodium chloride and water is being excreted. So that is the urinary excretion, and that is happening because of this pressure diuresis. The steepness of normal pressure natriuresis relation indicates that only a slight increase in blood pressure is required to raise urinary excretion several folds. थोड़ा सा इंक्रीज ब्लड प्रेशर में होगा तो ये जो है एकदम से एक स्टीप राइज होगी, एकदम इट्स नॉट अ स्लो राइज, इट्स अ सडन राइज in the blood in the
pressure, that in the excretion of sodium due to this required this increased blood pressure. थोड़ा सा ब्लड प्रेशर राइज हुआ है और यूरिनरी आउटपुट उसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. Number 8, the increased fluid excretion balances the increased intake. जब फ्लूइड एक्सक्रीशन ज़्यादा हो रहा है फिर हमको प्यास ज़्यादा लगेगी, प्यास ज़्यादा लगेगी तो हम फ्लूइड ज़्यादा लेंगे. Thirst increases and further accumulation of fluid is prevented. So वो compensate सारा हो जाएगा. Now the renal body feedback mechanism operates to prevent continuous accumulation of salt and water in the body during increased salt and water intake. With normal functioning kidneys, the pressure diuretic mechanism is operating and pressure diuretic mechanism is operating effectively. Large changes in salt and water intake accommodates with only few tight changes. जब हमारा renal body fluid feedback mechanism normally operate कर रहा है तो increase salt and water intake और जो कैसे प्रिवेंट होगा, उसके एक्यूमुलेशन द बॉडी कैसे प्रिवेंट होगी विद नॉर्मल और किडनीज आर नॉर्मली फंक्शन. ऑफ कोर्स द प्रेशर डायरेटिक मैकेनिज्म इज ऑपरेटिंग इफेक्टिवली और प्रेशर डाययूरेटिक जो वाटर का diuresis है, water के excretion the urine is normally operating normally. So large changes in salt and water accommodate water intake accommodates with only slight changes in blood volume क्योंकि ये excrete हो रहे हैं with high blood pressure जैसे कि हमने अभी बात की थी. Extracellular volume is maintained, cardiac output is maintained. Arterial pressure is maintained because of this renal body feedback mechanism. अब इसमें क्या है कि रीनल बॉडी ये सब नॉर्मल उसमें हो रहा है, नॉर्मल किडनीज, नॉर्मल प्रेशर फंक्शनिंग किडनीज है, नॉर्मल pressure diuretic mechanism is working effectively और हम बेशक लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट और वाटर ले रहे हैं लेकिन ये अकोमोडेट थोड़ा सा कम अकोमोडेट होता है लेकिन ओनली वेरी स्लाइटली. लेकिन बाकी जो है ये प्रेशर डाययूरेसिस से और प्रेशर नेट्री यूरेसिस से एक्सक्रीट होता जा रहा है. और वॉल्यूम चेंजेस, ये जो चेंजेस होंगी स्लाइटली वो ब्लड वॉल्यूम में होंगी, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड्स वॉल्यूम में, कार्डियक आउटपुट में एंड आर्टीरियल प्रेशर. एंड दिस ऑपोजिट हैपन्स विद स्मॉल इनटेक. सब कुछ ऑपोजिट होगा अगर सोडियम क्लोराइड का इनटेक और सॉल्ट एंड वाटर का इनटेक नॉर्मल से कम है तो सब प्रिजर्व होती जाएंगी और volumes and outputs, cardiac output is going to come back to normal for water and salt not being excreted out of the kidney. जब तक के normal volumes नहीं हो जाती. Other factors like nervous and hormonal system can raise sodium chloride excretion without an immeasurable increase in cardiac output and arterial pressure with moderate intake of these things. Now, with prolonged high in sodium intake lasting for several years, high BP may occur even in
नॉर्मल पर्सन में भी अगर आदमी जो ले रहे हैं वो हाई इनटेक ऑफ सोडियम ले रहे हैं तो दे आर गोइंग टू हैव become hypertensive, high BP में आकर even in the persons who are initially salt sensitive. सब नॉर्मल पर्सनस में ये नहीं होगा, जो पर्सन लोग जो सॉल्ट सेंसिटिव है उनमें ब्लड प्रेशर डेवलप हो जाएगा. When blood pressure does rise, pressure natriuresis provides a critical means of maintaining balance between sodium intake and urinary sodium excretion. Next topic is precision of blood volume and extracellular volume regulation. What blood volume normally remains almost exactly constant despite large changes in fluid intake as follow. हम बेशक ब्लड वॉल्यूम रिमेन नॉर्मल रिमेन कर रहता है, हमारे हम अगर ज़्यादा भी फ्लूइड इंटेक ले रहे हैं, हमारा फ्लूइड इंटेक ज़्यादा है, तो ये कैसे होता है कि स्लाइड चेंज इन ब्लड वॉल्यूम होता है. जब फ्लूइड ज़्यादा लेंगे देयर इज अ स्लाइड चेंज इन ब्लड वॉल्यूम which results in marked change in cardiac output. This slight change in cardiac output then is going to result in large change in blood pressure. Thirdly, slight change in ये जो है changes separate है. Slight change in blood pressure, तीन changes होती हैं. Number one, changes slight change in blood volume होगा और it is going to result in marked change in cardiac output. Simultaneous there is slight change in cardiac output other than the जो हमने पहले बात की, it is going to result in large change in blood pressure. Thirdly, slight change in blood pressure is going to result in large change in urinary output, which which is the effective feedback control of the blood volume. Same control mechanism operates in conditions like hemorrhage. Hemorrhage क्या होता है? It's loss of blood. In hemorrhage, there is falling blood pressure along with nervous and hormonal control factor. Uh, जो है ये ऐड करेंगे. फ्लूइड रिटेंशन ऑफ द किडनीज ऑल्सो सेपरेट. ये कंट्रोल जो हम अभी बात कर रहे थे उसमें होगा. जब हेमरेज में भी यही कंट्रोल होगा. ब्लड प्रेशर फॉल करेगा. ब्लड प्रेशर फॉल करेगा तो देयर इज लार्ज चेंज इन यूरिनरी आउटपुट. और इसमें जो बाकी और दो फैक्टर्स काम करते हैं, हेल्प आउट करते हैं इन टू मेंटेन द ब्लड वॉल्यूम्स is nervous and hormonal factors. Fluid retention by the kidney also participates. जो fluid retention होगी kidneys में, because hemorrhage से blood pressure fall किया है तो उसके वजह से हमको kidneys जो हैं वो अपने जो fluid plus electrolytes retain करेगा, reabsorb करेगा. Next topic is distribution of extracellular fluid between interstitial spaces and vascular system. Now, ingested fluid goes to the blood. From there, it is rapidly distributed between interstitial spaces and the plasma. Therefore, blood volume and extracellular fluid volume are controlled simultaneously. तो ये simultaneously जो हम ले रहे हैं फ्लूइड, ये simultaneously ब्लड में जा रहा है और प्लाज्मा में जा रहा है. इंटरस्टिशियल स्पेसेस में जा रहा है और प्लाज्मा में जा रहा है. Therefore, blood volume and ECF volume are controlled simultaneously. Sometimes distribution of extracellular fluid between interstitial spaces and blood can vary greatly. That is not an equal. कभी ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन जो है ब्लड और इंटरस्टिशियल स्पेसेस में वेरी करती है. किसी में ज़्यादा हो गया, किसी में कम हो गया. Now the principal factors that will cause accumulation fluid in the interstitial spaces are
जो फैक्टर्स जो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में फ्लूइड एक्यूमुलेट करेंगे, एक तो है कैपिलरी हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इंक्रीज करेगा, सेकंड प्लाज्मा कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, thirdly इंक्रीज कैपिलरी परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, फोर्थ इज ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ lymphatic vessels. इसका एग्जाम्पल ऐसे है कि when small amount of fluid accumulates in the blood because of too much fluid intake or decreased renal output, about 20 to 30% stays in blood volume, and is remainder of it moves to interstitial spaces. But when extracellular fluid volume rises above 30 to 50%, तो क्या होगा जब 20 to 30% है तो फ्लूइड जो है वो ब्लड में एक्यूमुलेट होगा, वहाँ से ये मूव ऑन कर जाएगा टू द किडनीज एंड so on, and too much fluid intake or decreased renal output, and it is going to stay that this increased amount of fluid which we are taking, only 20 to 30% is going to stay in the blood, और रिमाइंडर जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेसिस में चला जाता है। लेकिन अगर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम राइज इससे ज़्यादा राइज करती है, that is about 30 to 50% above normal, almost all the additional fluid moves to the interstitial spaces and little remains in the blood. ये हम बात कर रहे थे कि ये वेरी कर सकता है ब्लड में और जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इन ब्लड एंड इंटरस्टिशियल स्पेसेस। अब जब वॉल्यूम इसी वॉल्यूम जो है 30 to 50% अबव नॉर्मल राइज किया है, तो most of the fluid goes into the interstitial spaces and very little remains in the blood. This is because once interstitial fluid pressure rises from its normal negative value to become positive, normal value से जब ये positive हो जाता है, tissue spaces become compliant, उनमें इतना वो स्पेसिंग आ जाती है, एंड लार्ज अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड देन पोर्स इन, इतनी जगह बन जाती है, कंप्लाइंट हो जाते हैं कि उनमें जा सके इन दीज विदाउट इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब स्पेस ज़्यादा हो गई इसलिए फ्लूइड तो जा रहा है इंटरस्टिशियल स्पेसिस में ही, लेकिन इंटरस्टिशियल फ्लूइड प्रेशर जो है इज़ नॉट राइजिंग मच, much more, uh, much more, because सेफ्टी फैक्टर जो है वो लूज हो गया है, क्योंकि ये नेगेटिव प्रेशर से, नेगेटिव वैल्यू से इंटरस्टिशियल प्रेशर जो नेगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव में चला गया है, इसके कंप्लायंस ज़्यादा हो गई है to adjust to accommodate the large amount. अब ये जो है इस का अमाउंट ऑफ फ्लूइड तो ज़्यादा हो गया, लेकिन बिकॉज स्पेस भी ज़्यादा हो गई है इसलिए इसका प्रेशर does not rise much. Normally, interstitial spaces act as overflow reservoirs for excess fluid, but when volume increases by 20 to 30%, 30 liters, ये इतना ज़्यादा ये इंटरस्टिशियल स्पेसेस में हम इसको कहते हैं ओवरफ्लो रेजर्वायर, इज दैट जो फ्लूइड है वो यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है और इट्स एन रेजर्वायर। जब ये फ्लूइड अमाउंट जो है 10 to 30 लीटर्स पे पहुँच जाती है, तो ये जो कंडीशन होती है इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड, रीचेस 10 to 30 लीटर्स, दिस कंडीशन इज नोन एज ओडेमा। हियर इज अ फिगर, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि
This is the normal fluid levels, that is 5 liters, uh, 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 5 liters. एंड जब इसमें से ज़्यादा फ्लूइड ज़्यादा लेते हैं, ज़्यादा होता चला जाता है, तो accumulates in the interstitial spaces. जब ये interstitial spaces में 10 to 30 लीटर ज़्यादा हो जाता है, तो 10 से लेकर 30 लीटर्स तक, तो दिस कंडीशन इज नोन एज अडीमा. ना अगर यही जो है ये 5 लीटर से कम हो जाएगा, से एट अबाउट 3.5 लीटर्स, तो कोलैप्स इतना ज़्यादा हो जाता है, blood needed by the body is not enough, it is going to result in death of the person. Nervous and hormonal control. The factors that nervous and hormonal factors that increase the effectiveness of renal body fluid feedback. Number one is sympathetic control of renal excretion. Uh, there are, as you must have read in the circulation heart, we have baroreceptors, and there are also low pressure stretch receptors. These two, baroreceptors and low pressure stretch receptors, uh, का एक्शन होता है, एंड देयर एक्शन कंट्रोल्स दिस feedback mechanism. They help to control this feedback mechanism. Kidneys have extensive sympathetic activity, so can alter renal sodium and water excretion. सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज हो सकती है, डिक्रीज हो सकती है. किडनीज में बहुत एक्सटेंसिव सिंपैथेटिक नर्व्स होती हैं, so when they are activated or they are inhibited, they can alter the renal sodium and water excretion. They also regulate extracellular fluid volume under some conditions. Regular is the renal sodium and water, and under some condition it's the extracellular fluid volume which is controlled. For example, in case of hemorrhage, which leads to low blood volume. This low blood volume then hemorrhage, low blood pressure leads to pressure in the. Sorry, I think going again. Under some conditions, that is in case of hemorrhage, वैन हैमरेज की वजह से ब्लड वॉल्यूम जो है कम हो जाएगा, ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा, दैट्स लेस ब्लड गोइंग टू द पल्मोनरी ब्लड वेसल्स, and pressure there decreases in pulmonary blood vessels and in other low pressure areas in the thorax. This results in reflex activation of the sympathetic system, and that stimulates renal sympathetic nerve activity. नर्व एक्टिविटी जब सिंपैथेटिक नर्व एक्टिविटी स्टिमुलेट होगी, तो इट इज गोइंग टू डिक्रीज सोडियम एंड वाटर एक्सक्रीशन एज फॉलो. सिंपैथेटिक नर्व्स सिंपैथेटिक सिस्टम जो है, इट्स गोइंग टू कॉज कंस्ट्रिक्शन ऑफ रीनल आर्टेरियोल्स, which in turn decreases glomerular filtration rate if sympathetic activation is swell. Secondly, increased tubular reabsorption of salt and water होगा. एक renal vessels की arterioles की constriction होगी. जब इस constriction होगी, तो there is decrease in glomerular filtration rate, and there is increased tubular reabsorption of salt and water. Thirdly, stimulation of renin release by sympathetic activity stimulation. It stimulates renin release, angiotensin II release, and aldosterone formation. And these
to angiotensin 2 and aldosterone are further going to increase tubular reabsorption. If reduction in the blood volume is great enough to lower systemic arterial pressure, अब ब्लड वॉल्यूम की रिडक्शन इतनी ज़्यादा है कि वो सिस्टेमिक आर्टीरियल प्रेशर कम कर रहा है. Further, there is further activity of sympathetic nervous system, which in turn causes further activity of the further activity of sympathetics stimulation or sympathetic nervous system activation जो होगी, it is going to cause decreased stretch of baroreceptors present in carotid sinus and aortic arch. Now reduction in blood volume होगा, और अगर it's great enough to cause, it is causing lowering the systemic arterial pressure. This ये जो systemic arterial pressure है, इसमें sympathetic stimulates होंगे, तो it's further uh, uh, this further activates sympathetic nervous system, because and this causes decreased stretch of baroreceptors located in carotid sinus and aortic arch. All these together, that is renin activity, angiotensin, aldosterone, and activity of systemic, activity of sympathetic nervous system, they all together play important role in rapid return of the blood pressure to normal in case of acute hemorrhage. Now, what is the role of angiotensin 2? Abbreviation for angiotensin is ANG capital in controlling renal excretion. With excess sodium intake, जब हम ज़्यादा sodium intake लेते हैं above normal, there is decrease in renin secretion. Decrease in renin secretion results in decreased angiotensin 2 formation. Normally, normally it increases tubular reabsorption of renal sodium जब angiotensin 2 ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे angiotensin 2 is decreasing. This decreases tubular sodium and water reabsorption. Tubular sodium और water reabsorption ज़्यादा reabsorb नहीं हो रहा. That is going to result in increased excretion by kidneys of sodium and water. अब angiotensin 2 का रोल क्या है इन कंट्रोलिंग इज वन, जब हम एक्सेसिव सोडियम अबव नॉर्मल लेते हैं, it decreases renin secretion. This renin secretion, decrease in renin secretion decreases angiotensin 2 formation. This angiotensin 2 formation decreases tubular sodium, क्योंकि angiotensin 2 का फंक्शन है to reabsorb sodium and water. जब ये कम होगी तो it also decreases sodium and water reabsorption. This sodium and water reabsorption, decrease in sodium and water reabsorption is going to result in increased excretion of sodium and water by the kidneys, and this minimizes the minimize करता है rise in extracellular fluid volume and arterial pressure. अब चूँकि fluid और salts are being excreted, so blood pressure और जो volume ECF volume ये minimize हो जाता है and it comes to almost normal. Opposite happens when we take low sodium intake, when our sodium intake is low. Change response to angiotensin 2 formation in pressure diuresis. ये हम फिगर में देखते हैं. Here, normally we can see here with high angiotensin 2, there is
rise, but this is not a steep rise, slow rise in sodium sorry, this is first going to the normal. This is normal aldosterone secretion, angiotensin 2 secretion, this thing, and it results in normally this is a very steep rise in sodium and intake and output. When angiotensin 2 is blocked or less due to any reason, this this is slow rise. As we can see, it's slowly rising, and it is not that much rise as compared to the normal. Similarly, with high angiotensin, with when there is high intake of sodium, that can suppress angiotensin 2 formation. Also, uh, it's going to result in much formation of angiotensin 2, and that is going to result in, so जब ज़्यादा angiotensin secretion होगी, it's going to absorb more salt and water. So more salt and water being accumulated into extracellular fluid, and blood volume increases, and so the blood pressure in this case is going to rise by, can rise up to 50 millimeters of mercury or more. Drugs that block angiotensin 2 are, and that angiotensin formation is angiotensin converting enzyme inhibitor, angiotensin 2 receptor antagonist, that results in that results in sodium excretion to the receptor and back towards normal sodium excretion of the sodium excretion, sodium levels by this excretion. Excessive angiotensin 2 does not usually cause large increase in extracellular fluid, uh, large increase in extracellular fluid volume, because increase in artery pressure counterbalances the angiotensin 2 mediated sodium retention. With excess of angiotensin 2 levels, neither decrease nor increase of extracellular fluid occurs unless there is heart failure or renal failure. Mechanism is large increase in angiotensin 2 occurs with renin secreting tumors of the kidney. ये angiotensin 2 कहाँ से large हो सकती है? Is by the tumors secreting this angiotensin 2 of the kidneys. High angiotensin 2 initially causes sodium and water retention by the kidneys, and there is small increase in extracellular volume. It also initiates rise in arterial pressure that results in quick release in kidney output of sodium and water, thereby overcoming sodium and water retention and establishing balance between intake and output of sodium at a high arterial pressure. Role of aldosterone in controlling renal excretion is closely related to angiotensin 2. That is, reduction in sodium intake increases angiotensin 2, that stimulates aldosterone secretion, that decreases urinary excretion, therefore maintains the balance. Here we have Conn's syndrome. This is increased aldosterone secretion, and it it causes increase in sodium reabsorption, decrease in sodium excretion by the kidneys, and kidneys is initially transient. After 1 to 3 days of the sodium and water retention, extracellular fluid rises
by 10 to 15% with simultaneous increase of blood pressure. When the arterial pressure rises sufficiently, kidney from the sodium and water retention, escapes from sodium and water retention and thereafter excretes जो रिटेंशन किडनी कर रहा है पहले वो escape हो जाती है and results in increased amount of sodium and sodium intake. So it comes to that whatever amount of sodium we are taking in is excreted out. Now, role of antidiuretic hormone in controlling renal water excretion. Antidiuretic hormone जो है is related with uh, uh, water excretion or retaining. Antidiuretic means it antis the excretion of water, so it preserves the water. Plays important role in excreting small volumes of concentrated urine with normal amounts of salt. ये स्मॉल थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन एक्सक्रीट करता है लेकिन सॉल्ट जो इसके साथ एक्सक्रीट होते हैं दे आर इन द नॉर्मल अमाउंट विच शुड बी इन वाटर डेप्रिवेशन जब पानी की डेफिशिएंसी हो जाती है ग्रेट एलिवेशन ऑफ प्लाज्मा लेवल्स ऑफ एंटीडायूरेटिक हार्मोन्स are stimulated, which results in increased water reabsorption by the kidney and help minimize the decrease in extracellular fluid volume. अब अगर वाटर डेप्रिवेशन 24 to 48 hours के लिए only slight decrease in extracellular volume और arterial pressure होगा if antidiuretic hormone effects are blocked by antagonizing drugs जो इसको antagonize करते हैं decreased reabsorption or water will occur in distal tubules and collecting tubules for the same period and will result in substantial fall in अब ज़्यादा वाटर एक्सक्रीट हो रहा है ज़्यादा एंटी डायूरेटिक हार्मोन का इफेक्ट ब्लॉक हो गया है बाय द ब्लॉकिंग ड्रग्स और रीअब्जॉर्प्शन वाटर की डिस्टल ट्यूबल और कलेक्टिंग ट्यूबल में कम है so more water is being excreted. This more water being excreted results in fall in extracellular fluid volume and arterial pressure. This is helpful in cases where there is water retention, जैसे कि ओडिमा वगैरह में होता है. Excess antidiuretic hormone causes only slight increase in extracellular fluid volume, but has large effect on the decrease in sodium concentration. एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम में तो इसका कोई इतना इफेक्ट बहुत स्लाइट इफेक्ट होता है लेकिन सोडियम कंसनट्रेशन बहुत डिक्रीज हो जाती है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड extra cellular fluid volume there is decreased in extra अब वॉल्यूम जो है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है सो सोडियम कंटेंट तो उतना ही रहता है लेकिन चूँकि ज़्यादा वॉल्यूम है उसके लिहाज से सोडियम कंटेंट्स जो है सोडियम अमाउंट जो है दैट डिक्रीजेस and at the same time there is small increase in arterial pressure. Loss of sodium from extracellular fluid is through pressure natriuresis जो एक तो वो उसमें वैसे डाइल्यूट हो गया दूसरा जो सोडियम इज बीइंग एक्सक्रीटेड एंड दिस ड्यू टू increase in the pressure which is a small increase and uh, this excretion of sodium is by the mechanism of pressure natriuresis. Now it is observed that there is only 10 to when there is 10 to 15% increase in क्या extracellular हुआ volume. मैम बता थोड़ा सा टाइम
Role of atrial natriuretic peptide. Uh, it is released by the cardiac atrial muscle, stimulates the stretch of the atrial muscle because of increased volume. Once released by the cardiac atria, goes into the circulation. From there, it goes acts on the kidneys. That results in small increase in GFR and decrease in sodium reabsorption by the collected urine. This combined action of atrial natriuretic peptide results in increased excretion of salt and water, and this helps to compensate for excess blood volume. Integrated response to changes in sodium. High sodium intake stresses autonomic sorry, high sodium intake suppresses an atrial natriuretic system and the natriuretic peptide system and activates this. It can either suppress or activate the atrial natriuretic system. Increased sodium intake results in increased sodium intake, increased sodium output lags. In case of increased sodium intake, sodium output lags behind, slightly behind, and so cumulative sodium balance that results in increase. सोडियम इनटेक ज़्यादा है, सोडियम आउटलेट जो है वो लैग बिहाइंड हो गया है और इट्स बिहाइंड एंड सो द cumulative accumulation of the sodium, and that results in increase in extracellular fluid volume. This slight increase in extracellular volume triggers changes in sodium excretion. Mechanism is number one, activation of low pressure receptors reflex that originate from the stretch receptors of atria. Number two is suppression of angiotensin II formation. Thirdly, stimulation of natriuretic system, especially of atrial natriuretic peptide. Small increase in atrial pressure caused by volume expansion may occur with large sodium intake, which results in increased sodium excretion through pressure natriuresis. Conditions that cause large increase in blood volume and extracellular fluid volume. Number one is congestive cardiac failure, that is CCF, results in blood volume increase up to 50 to 20%, and ECF sometimes up to 200% or more. Initially, cardiac failure results in decreased cardiac output and consequently decreases arterial pressure, which in turn activates multiple sodium retaining systems, especially renin, angiotensin, aldosterone, and sympathetic nervous system. Low blood pressure results in salt and water retention, which in turn results in increased volume retention and returns the blood pressure and cardiac output to normal. Other factors is um, conditions are myocardial failure, heart regular diseases, congenital abnormalities of heart. This way it is accumulated. Next topic is increased blood volume caused by increased capacity of circulation. Increased vascular capacity initially reduces circulatory filling pressure, which in turn decreases cardiac output and atrial pressure. Reduction in mean circulatory filling pressure जो है वो that is going to decrease cardiac output and arterial pressure. That is going to result in salt and water retention by the kidneys until the blood volume increases sufficiently to fill the extra capacity. For example, ये किस में होता है in pregnancy जब
यूट्रस होता है उसका किडनीज जो उसके और इनलार्ज होते हैं उनका कैपेसिटी किलिंग कैपेसिटी ज़्यादा हो जाती है दैट इज़ गोइंग टू रिजल्ट इन increased blood volume after 15 to 20%. सेकेंडली वेरिकोज वेन्स होती हैं लोअर लेग्स में जो हमारी सुपरफिशियल वेन्स होती हैं in long standing cases or some obstruction those swell up and blood or fluid is accommodated there and up to 1 liter of fluid can accommodate. Conditions that cause large increase in extracellular fluid volume but with normal blood volume. This is caused by leakage of fluid and proteins in the interstitium, which, which results in blood volume, kidney response, interstitial blood volume, kidney response is similar uh, that occurs in hemorrhage, that is renin, retaining the salt and water. Then we have another condition, nephrotic syndrome. In nephrotic syndrome, there is loss of plasma proteins in the urine and there is retention by the kidneys. इसमें glomerular capillaries जो है lose large amounts of proteins into the filtrate and and the urine because of increased glomerular capillary permeability 30 to 50 grams of plasma proteins may be lost per day. That's a large amount being lost. Plasma concentration may fall to less than one third of the normal, which results in decrease in plasma colloidal osmotic pressure to low levels. Capillaries all over the body filter, then capillaries all over the body filters. क्योंकि प्रेशर लो है तो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर होगा pressure gradient of the fluid into the various tissue and this is going to result in edema that is collection of the fluid in the excessive collection of fluid in the interstitial spaces and it is going to result in decrease in plasma volume. Renal sodium retention in the nephrotic syndrome occurs through number one, leakage of proteins and fluids from the plasma into the interstitial fluid, stimulation of various sodium retaining systems which are going to retain sodium are renin, angiotensin, aldosterone in sympathetic nervous system. Kidneys continue to retain sodium and water till plasma volume is restored to near normal. But plasma proteins become more diluted. More fluid, they become more fluid, dilute, more fluid leaks into the tissues. The net result is massive fluid retention and that results in tremendous edema. And this is known as, and it is going to remain there unless the treatment is given. Then another heading is liver cirrhosis. That is in this liver cirrhosis में decreased synthesis होती है plasma proteins की by the liver because damage of the liver cells and sodium retention होती है by the kidneys. सिरोसिस में बहुत फाइब्रस टिश्यू लिवर सिरोसिस में फाइब्रस टिश्यू बहुत हो जाता है replacing the normal liver cells which impedes blood flow through the liver that in turn rises capillary pressure throughout the portal vascular bed that in turn results in leakage of fluid and proteins into the peritoneal cavity. Peritoneum आपने definitely पढ़ा है in anatomy. So here instead of fluid being accumulated in interstitial spaces, it is being accumulated in the peritoneal cavity and this accumulation of fluid is known as ascites. Renal response is same as in the other conditions associated with decreased plasma volume. That's all for today and with that we finish the chapter and allow this.
आपने सबको किया हुआ है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मेरी आवाज़ आ रही है? जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने नाम के साथ रोल नंबर मेंशन नहीं किए वो अपने रोल नंबर मेंशन करें, नहीं तो एब्सेंट लग जाएगी। रोज़ाना आपसे कहना पड़ता है।